Well, a very warm good evening from Dr. Ananth Vaidyanathan. I am live to you from Mega Classic Banquet Hall, Borivali, Mumbai. This episode, the hospitality show, this is the 10th episode, and we have had some stalwarts coming to the show. This hospitality show is powered by Wits Hotels and Resorts all over India and abroad. This show is live on Facebook and YouTube, and if you forget or if you miss to see here, you can watch it live on YouTube as well as in Dr. Ananth Vaidyanathan Facebook page. This show is being viewed by many from all over the world and has won the accolades of many people from the same industry as well as from the other fraternities. Today's episode, we have two great peoples, a mother-son duo, who have taken the hospitality industry to the next level. It is my proud moment to welcome both of them to this wonderful episode of the hospitality show, and I take this opportunity to ask Dimple Madani to give an introduction of today's first chief guest, Ms. Archana Patodia. Thank you, sir. Namaste and good evening to all our online viewers. Welcome to the 10th episode of the Hospitality Show, hosted by Dr. Ananth Vaidyanathan, CEO Touch of Class, in conversation with Mrs. Archana Patodia. Born and brought up in Rajasthan, Mrs. Archana Patodia, the director of the Bike Hospitality Limited, is an arts graduate from Rajasthan University. Mrs. Patodia has vast experience in management and administrative function. Her area of interest includes management training and leadership. With the COVID-19 pandemic, people were worried about healthy and immunity-boosting food. With the lockdown, all types of snacks and sweets were being made at home. Mrs. Patodia took this opportunity and started out her new venture, Bike Kimitas. The brand emphasizes on Shuddh, Swastik, homemade and handcrafted sweets and snacks. The ingredients used are selected based on the various health benefits, focusing on immunity boosters. The sweets can be consumed by all, including health-conscious people as well as diabetics. All the food items are freshly made to order. She is actively involved in social service towards various organizations. Some of her contributions include Skill Development Community Center at Rosepadaville, Palghar District, toilet blocks for 27 homes at Rosepadaville Village, Palghar District, village adoption at Vartak at Village Vasai, sanitary napkin vending machine at Savitribai Phule Girls Hostel, Girls High School and Junior College, Andheri, heritage garden at Khopoli, rural water supply project at Talasri, lunch to cancer patient at Sarvodaya Hospital, Ghatkopar. So ladies and gentlemen, with a round of applause, please welcome Mrs. Archana Patodia. What a wonderful moment. What a great intro. Thank you very much, Dimple. Welcome to the show, Archana ma'am. It's an honor to have you here as an entrepreneur and as a great social activity. And you bring in so much of added version to the hospitality industry. Now, let me go straight to the conversation. Let me ask you, how did an art graduate student enter into the hospitality sector? सबसे पहले तो आपको, आपकी टीम को और अपने सारे व्यूअर्स को मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते, गुड इवनिंग। या डिम्पल जी, सो मेनी थैंक्स। आपने इतना कुछ, इतने से टाइम के अंदर इतना कुछ सब एक्सप्लेन कर दिया है, दैट इज अमेजिंग, थैंक्स अ लॉट। एंड फॉर सोशल सर्विस मैं यही कहूंगी कि मेरा कुछ भी किया हुआ नहीं है, ये सब उस ऊपर वाले की निमित्त है कि उसने हमें मौका दिया, हमने उसने हमको निमित्त बनाया और सबके सहयोग से ये सब काम हो पाए। यस, सॉरी सर, आपका क्वेश्चन था आर्ट्स स्टूडेंट। यस, हाउ डिड द आर्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट एंटर इनटू द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर? हाँ, ऐसा है सर कि जैसे हम लोग मारवाड़ी फैमिली से हैं और आपको पता है कि मारवाड़ी के अंदर तो जन्म से ही वो बिजनेस के जज्बात आ जाते हैं। अगर मैं मेरी मम्मी से शुरू करूं तो मैंने मम्मी से ही मिला होगा मुझे इस तरह से।
तो जैसे ही अनिल जी के साथ शादी हुई और सारे बिजनेस के होते होते हमारा एक इससे पहले हॉस्पिटलिटी से पहले अनिल जी का दूसरा बिजनेस था, उससे हम लोगों ने श्री शाकंभरी एग्जिम्स करके एक नई कंपनी शुरू की जिसके अंदर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था पिलोज एंड फाइबर्स का, ऐसे सब करके, जो आज एक बड़ी अपनी खुद की कंपनी बन गई है जिसके अंदर हमारा खुद का प्रोडक्शन रहता है खोपोली के अंदर। एंड आई एम वेरी प्राउड कि माय डॉटर आस्था इज टेकिंग केयर ऑफ दैट कंपनी वेरी वेल। ओके। तो वहीं से उसके बाद में जब उसके अंदर हमको लग रहा था कि इट्स लिमिटेड स्कोप, हमको और आगे जाना चाहिए, तो हम लोग इसमें हॉस्पिटलिटी के अंदर सबसे पहले हमारे पास स्कोप आया माथेरान की प्रॉपर्टी का, द बाइक हेरिटेज। तो अनिल जी के सामने जब वो प्रपोजल आया और हमारे सब लोग टीम ने डिस्कशन किया, तो हम लोगों को लगा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और अनिल जी के खून में है हॉस्पिटलिटी, अतिथि देवो भव। अगर घर पे भी कोई आता है तो उसका इतना आदर सत्कार करते हैं, तो ये जो प्रोफेशन था वो बिल्कुल सूट कर रहा था उनके साथ में। एंड विद गॉड ग्रेस वो एक वहां से जो शुरुआत हुई उसके बाद में आपके सामने ही है। तो इस तरह से ये शुरू हुआ। मैं आपको 6-7 साल से जानता हूँ, आप तो बहुत स्वीट आदमी हैं, बट आपका ये बाइक की मिताज, ये कॉन्सेप्ट कैसा शुरू किया आपने, और आप कितना पसंद करते हो स्पीड को, और आपका फिटनेस रिजीम क्या है? यस सर, अभी जैसे ये लॉकडाउन जो शुरू हुआ था अपना लास्ट ईयर से, ये पैंडेमिक की तरह हो, तो उसमें क्या होता था कि हम लोग सब चीज घर पे ही बना रहे थे, ईच एंड एवरीथिंग, इवन पाव से लेके पिज्जा लेके स्वीट्स लेके एवरीथिंग वो यूट्यूब पे चैनल पे देख के हम लोग घर पे बना रहे थे। और इसी तरह से मेरी सिस्टर है, वो भी स्वीट्स घर पे बना रही थी और वीडियोस एंड पिक्चर शेयर कर रहे थे आपस में। तो उनको बनाने का बहुत शौक है, तो ऐसे ही मजाक में मैंने उनको बोला, दी आपको इतना शौक है, अगर आप बनाने में इंटरेस्ट रखते हो तो चलो मैं सेल करती हूँ। और इट्स लाइक ये एक फाउंडेशन था हमारे इस बाइक की मिठास का, वहीं से शुरू हुआ। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी दीदी जो भी चीजें बनाती है, हमारे ड्राई फ्रूट लड्डूज हैं, खसखस लड्डूज हैं, और जो भी स्वीट्स हम बनाते हैं, एक चीज आप मान के चलिए, वो मार्केट में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। स्वीट शॉप तो मार्केट में रहती ही है, लेकिन हमारी जो स्वीट्स है वो हेल्दी है, क्योंकि हम लोग उसके अंदर या तो जगेरी यूज करते हैं या डेट पाउडर यूज करते हैं, शुगर नहीं रहती है, मेड टू ऑर्डर है, जैसा डिम्पल जी ने पहले सारी स्पेसिफिकेशन दी ही है। शुरुआत वहीं से हुई कि मेरी दीदी बना रही थी, हम लोग घर पे बना रहे थे। एंड मैं अपनी टीम बाइक का जो हमारा स्टाफ है उनको मैं हमेशा से बोलती थी, क्योंकि हम लोग राजस्थान कल्चर में हैं और बहुत सारे लड्डूज अपने दादी नानी के जमाने के होते हैं जो विंटर के अंदर स्पेशली खाए जाते हैं, जो इम्यूनिटी को बूस्ट कर देते हैं। आप विंटर में अगर मेथी लड्डू या सौंठ लड्डू या गोंद के लड्डू जो आदमी खा लेता है, वो उसके लिए साल भर के लिए वो चीजें काम करती है। तो ये सब वहीं से शुरू हुआ। और फिर विद गॉड ग्रेस, मतलब जिस दिन मैंने टेलीकास्ट किया पहला हमारा क्रिएटिव, मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं थी कि मुझे फर्स्ट क्रिएटिव मैंने ऐसे ही जो एक शेयर किया है उससे मुझे ऑर्डर आ जाएगा। एंड यू वोंट बिलीव कि जिस दिन शेयर किया उसी दिन ऑर्डर आ गया। तो एक वो भगवान का एक ब्लेसिंग था कि आप लोग सही ट्रैक पे जा रहे हो, आपको ये करना ही है। और हमारा फर्स्ट ऑर्डर आया और उसके बाद में तो कंटिन्यूअसली चल ही रहा है एंड सब लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है। एंड थैंक यू सो मच। I was saying God helps people who help themselves only. That is true in your life. Yes. Acha, you are a very busy schedule in your business. You give time for your social activities as well. आप कैसा फैमिली लाइफ, सोशल एक्टिविटी, बिजनेस, ये सब कैसा संभालते हो अर्चना मैम? आनंद जी, ऐसा एक्चुअली कुछ भी होता नहीं है कि हम लोग बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहे हैं। एक तो जो औरत जो होती है ना, वो वैसे मल्टीटास्किंग होती है, भगवान की देन है ये, तो इसमें मैं कोई एक्सेप्शन नहीं हूँ। ये हम सभी औरतों के साथ है कि हम मल्टीटास्किंग रहते हैं। एंड सबसे बड़ा अगर मेरे इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है तो वो है हमारी ज्वाइंट फैमिली का और हमारे संस्कार का। हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, सुनील जी को आप जानते ही हो, भाभी जी हमारा एक ही घर है, बच्चे एक साथ पले बड़े हैं। मतलब मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि किस तरह से बच्चे बड़े हो गए और किस तरह से हम लोग बिजनेस में, किस तरह से मैं पार्टिसिपेट कर पाई हूँ, किस तरह से मैं अनिल जी के साथ हर डेस्टिनेशन पे जाना, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, सारी चीजें मतलब अपने आप स्मूथली होती चली गई। मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट उसके लिए देना ही नहीं पड़ा, ओनली बिकॉज ऑफ आवर ज्वाइंट फैमिली, आवर लव एंड आवर स्ट्रेंथ एंड यूनिटी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा अर्चना मैम, आपका स्कूल डेज, कॉलेज डेज, आपका लाइफ बिफोर मैरिज, सब लोग व्यूअर्स के लिए सुनाइए, हम लोग भी सुनना चाहते हैं। आपका कॉलेज डेज कैसा गया,
कितनी सिबलिंग्स थे, आप लोग परिवार क्या था, मैरिज का पहले कैसा हुआ? यस सर। हाँ, तो जैसे मैं नवलगढ़ से बोर्न एंड ब्रॉट अप हूँ एंड नवलगढ़ में एक स्कूल से ही हमारी स्कूलिंग चालू हुई एंड वहीं से उसके बाद में स्कूल में भी, लेकिन ऐसा था कि मम्मी की परवरिश ऐसी थी कि मतलब टचवुड मुझे कभी हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ा, मैं कभी बीमार नहीं पड़ी। और इसका एक एग्जांपल ये है कि मुझे फुल अटेंडेंस के लिए अवार्ड मिला हुआ है। एंड स्कूल में भी हमारा एक ग्रुप ऑफ मतलब लड़कियों का हमारा एक सर्कल था जिसमें कॉम्पिटिशन्स रहते थे कि किसको फर्स्ट आए, कौन फर्स्ट आएगा, और उसी हिसाब से हमारी स्टडीज चलती थी। एंड एवरी ईयर ये रहता था कि फर्स्ट किसे आना है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही हमारा हमेशा चलता रहता था। एंड दूसरा, हमेशा ही थोड़ा खेल कूद में भी इंटरेस्ट हमेशा से रहा हुआ है, डिबेट ये सब, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट हमेशा से रहा है। देन कॉलेज के अंदर आने के बाद में हमें एक मौका मिला था जहां डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुझे बैडमिंटन और टेबल टेनिस खेलने के लिए जाने को मिला था, तो वहां पे भी हम लोग जीत के आए थे। तो एक तो ये जो आप फिटनेस का बोल रहे थे, ये शायद भगवान की कृपा से मेरे साथ अंदर से ही आया है, जहां लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ते हैं कि मुझे जिम जाना पड़ेगा या मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ये मेरा अपने आप से एक हेल्थ रूटीन बन गया है। जिस तरह से अपन को खाने की जरूरत होती है, मेरे लिए वो एक अपना रूटीन है कि जब तक एक्सरसाइज नहीं होगी या वॉकिंग नहीं होगी, वो टाइम ड्यूरेशन कम हो सकता है लेकिन मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना है, और इस वजह से वो अपने आप से होता रहता है। तो कॉलेज लाइफ में भी इसी तरह से हम लोग पूरा आगे तक चल रहा था पूरा। एंड उसके बाद में मैरिज के लिए मेरा ऐसे ही था कि मुझे किसी, जैसे जो हमारे जमाने में ऐसा होता था कि लड़के के घर से लोग आ रहे हैं, लड़की को दिखाया जा रहा है, वो लड़की को चल के बोलो या बोल के बताओ, ऐसे सब कुछ। और वो मेरा ऐसा था कि मुझे ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड अनिल जी का प्रपोजल इस तरह से आया कि सुनील जी एंड मेरे ब्रदर दोनों साथ में सीए कर रहे थे एंड वो मेरे को पहले से जानते थे, तो वो एकदम मतलब नॉन जैसा रिलेशनशिप हुआ एंड देन ये शादी का इस तरह से हुआ। तो ये मैसेज मैं आपको इसलिए देना चाह रही हूँ आनंद जी कि अपने जो भी व्यूअर्स हैं वो एक चीज समझें कि हम जो सोचते हैं वही हमारे साथ होता है। मैंने हमेशा से ये चीज सिर्फ इमेजिन की थी, मेरे दिमाग में कभी शादी का था नहीं, लेकिन मुझे ऐसा था कि मुझे इस तरह से ये चीज मेरे साथ नहीं होनी है, एंड भगवान ने वो उसी तरह से क्रिएट किया और मेरे साथ वो वही हुआ। सो वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वंडरफुल, वंडरफुल, गॉड्स ब्लेसिंग। आपको अभी कैसा फीलिंग होती है? आप एक व्हाट डू यू कॉल, एक सक्सेसफुल होटलियर है और आपको कौन सा जॉब फ्रंट में ज्यादा इंटरेस्ट है? आप रोज होटल में तो बहुत काम होती है, बट आपका कौन सा प्रोफेशन, कौन सा डिपार्टमेंट में और कौन सा स्कोप में आपको बहुत पसंद आती है, आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है? जैसे आपने बोला, होटल के अंदर अपने आप में एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और जहाँ पे पैरेलल इतने सारे डिपार्टमेंट एक साथ चलते हैं। तो मैं जब भी अपने किसी भी होटल में जाती हूँ तो वैसे तो मैं सारे ही डिपार्टमेंट देखती हूँ, फ्रंट ऑफिस से लेकर के किचन तक, इवन यूटिलिटी स्टाफ तक का अपन पूरा देखते हैं। लेकिन अगर मुझे पर्सनली अगर आप बोलेंगे कि मुझे सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है, तो ऑब्वियसली कुकिंग एंड सर्विंग मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक फुल सेटिस्फेक्शन देता है। आप जब घर में खाना बनाते हो और लोग उसको खाएं और उसको प्रेज करें, तो दैट इज द बेस्ट अर्निंग फॉर यू। एंड सर्विंग विद स्माइल फेस, तो वो मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन वो देता है। हम लोग सब लोग पैंडेमिक टाइम में देखा है, टफ टाइम्स हमारा इंडस्ट्री और एविएशन इंडस्ट्री का ही था बहुत, हम लोग ही सफर अभी भी कर रहे हैं ज्यादा मेरा हिसाब से। बट इस समय में आप कैसा आपको स्टाफ को रिटेन किया और कैसा उन लोग को मोटिवेट किया? हाँ, ये वेरी गुड क्वेश्चन सर, कि सभी लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है। ऑब्वियसली होटल इंडस्ट्री एंड टूरिज्म जो है वो सबसे ज्यादा इसमें इफेक्ट हुआ है, लेकिन हमारा स्टाफ किस तरह से, हमारी स्ट्रेंथ है हमारा स्टाफ। आप देख लीजिए कि आज अगर बाइक ऐसे सिचुएशन में भी खड़ा है, नए होटल ओपन कर रहा है, नए नए प्रपोजल्स आ रहे हैं, तो उसके पीछे हमारा एक ही है कि हमारी जो फाउंडेशन है, हमारी स्ट्रेंथ है, हमारा स्टाफ जो इतना लॉयल है कि जब अच्छा टाइम था तो कंपनी के साथ थे, और अगर आज वक्त में, आज इस समय में कंपनी को उनकी जिस तरह से जरूरत है वो हमारे साथ हैं, एकदम कंधे से कंधे मिला करके। और हमने कभी भी अपने स्टाफ को स्टाफ जैसे समझते नहीं है, क्योंकि ये कंपनी उनकी ही है। आज होटल में हम तो रहते नहीं है, हमारा स्टाफ ही रहता है, तो मैं हमेशा उनको यही बोलती हूँ कि ये आपका है। आपके पास यहाँ पे जो गेस्ट आता है वो हमारा अतिथि है,
और वो खुश होके जाएगा, वही आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो वो भगवान की कृपा से मतलब हमारा इतना अच्छा स्टाफ है, हमारी स्ट्रेंथ है कि आज 2 साल होने को आ गए ये वाली सिचुएशन के अंदर, लेकिन फिर भी हमारा स्टाफ हमारे साथ है और बिल्कुल लॉयल्टी के साथ हमारे साथ खड़ा हुआ है, कंपनी के साथ खड़ा हुआ है। तो आपको बोला आपको बहुत फेवरेट है, आप कुकिंग करते हो। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपका गाना से अनिल सर को कौन सा गाना बहुत पसंद आता है? अनिल सर को मैं अपने हाथ से जो भी बना के खिला दूं वो पसंद आता है सर। क्या बात है, जो भी $1 million आंसर हो गया है, तो $1 million आंसर। अभी अच्छा मैम, मैं भी आपका स्वीट्स टेस्ट किया हुआ हूँ और आपका बहुत स्वीट्स का बारे में सुना भी हुआ हूँ। अब मेरे को ये बताइए, आपका स्वीट्स कितना वेराइटीज का है और आपका स्नैक्स कितना वेराइटीज का है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है? इट इज अवेलेबल ओनली इन मुंबई और यू सप्लाई एवरीवेयर इन इंडिया? व्हाट इज द नेटवर्क, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क? सर हमारे जो स्वीट्स है मैंने बताया ये हेल्दी स्वीट्स हैं, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, और क्योंकि मैं भी शुरू से थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस रही हुई हूँ, तो इसी से ये दिमाग में आया कि अपने को हेल्दी चीज और लोगों को भी देनी चाहिए। तो हमारे इसके अंदर बहुत सारी वेराइटीज है, जिसके अंदर मैंने बताया कि अपने सारे तो लड्डूज ले लीजिए आप, जैसे गोंद के लड्डू, मेथी लड्डू, सौंठ, अजवाइन, जो भी हेल्दी लड्डूज हैं। फिर हमारे ड्राई फ्रूट्स लड्डू हैं, जो जिसके अंदर न शुगर है न जगेरी है, ओनली डेट्स के साथ वो बनाए जाते हैं। एंड दीज आर ऑल एवरलास्टिंग, आपको रेफ्रिजरेट करने की भी जरूरत नहीं है, वो खराब होते ही नहीं है। इसी तरह से और भी बहुत सारे स्नैक्स हैं। उसके अलावा आपने मुझसे पूछा डिस्ट्रीब्यूशन का। यस, हमारी सप्लाई सब जगह होती है, ऑल ओवर इंडिया। इवन मेरे से यहाँ लेकर के लोगों ने यूएस तक भी भेजा है। तो वो कोई ये, क्योंकि ये एवरलास्टिंग है तो कोई खराब होने का चांस नहीं है। कुछ चीजें हो सकती है, जैसे खसखस लड्डू है। इवन हम लोग वीगन स्वीट्स भी देते हैं सर, जो आजकल वीगन का इतना प्रमोशन में चल रहा है, तो वीगन स्वीट्स भी हम लोग बना के देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग मेक टू ऑर्डर ही देते हैं, फैक्ट्री के जैसे बना के कुछ भी नहीं रखते हैं। आप ½ kg का ऑर्डर दो, आप 1 kg का ऑर्डर दो, सब कुछ आपको उसी समय बना करके ही मिलेगा। तो इट्स वेरी हेल्दी, मतलब स्वीट खाने का सबका मन होता है, लेकिन अगर वो शुगर की वजह से नहीं खा पाए तो वो हमारी ये स्वीट्स आप बिंदास खा सकते हो, जो आपको आपकी टेस्ट को भी वो करेंगी, आपकी हेल्थ को भी बूस्ट करेंगी, आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेंगी। बहुत कुछ टेस्ट करना पड़ेगा फिर। यस सर, आई एम वेटिंग फॉर दैट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने कोयम्बटूर भी ऑर्डर गया है, बताइए, कोयम्बटूर भी ऑर्डर है। यस, या आप बहुत कुछ सोशल एक्टिविटीज भी करते हो, आप ये क्यों करते हो और करने के बाद आपको कैसा महसूस होती है? हाउ गुड यू फील? सोशल सर्विस क्यों करते हो सर? अगर इसका मैं एक ही लाइन में जवाब दूं आपको, 84 लाख योनियों में ये जो हमें मनुष्य शरीर मिला है, यह दुर्लभ है। और यह जो मिला है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपयोग है, सेवा। अगर हमने सेवा की तो हमने अपने इस जीवन को सफल बनाया है। तो ये बचपन से ही संस्कार में ही ये चीज आई हुई है कि जितना हो सके सेवा करनी है। और सेवा करने के लिए आपके व्यूअर्स आज देख ही रहे हैं, तो मैं रितंबरा जी का मैंने एक बार सेशन अटेंड किया था, तो उसमें मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी। कई बार होता है ना कि अपन सुनते तो बहुत चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें आपके जहन में बैठ जाती हैं। तो उन्होंने बोला था कि सेवा तन मन धन से तो होती है, लेकिन आप अपनी सोच से भी सेवा कर सकते हो। सोच से मतलब सबके लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना, सर्वे लोका सुखिनो भवन्तु। अगर हर इंसान इतना भी सोच ले तो वो भी आपकी सेवा है। जरूरी नहीं है कि मैं हाथ से ही किसी का कुछ करूं या मैं किसी को पैसा देके कुछ करूं। आप सोच के साथ भी सेवा कर सकते हो। तो सेवा का ये है कि मनुष्य इस जीवन को सफल बनाने की एक कोशिश है। वो परमपिता परमेश्वर जितना भी काम करवा दे, वो सेवा करने का सबसे बड़ा मोटो, मतलब अगर मैं बाइक की मिठास है या बाइक है, तो हमारा मेन मोटो यही रहता है। बाइक को शुरू करने के पीछे भी सर आज इतने होटल चल रहे हैं, तो हमारा सबसे बड़ा जो एक सेटिस्फेक्शन है वो यही है कि आज इतने लोगों को रोजगार मिला हुआ है, इतने लोगों का घर चल रहा है, और हमारा जो क्लाइंट आता है वो खाना खा के खुश होके जाता है। तो हमें और क्या चाहिए? तो दिस इज द बेस्ट satisfaction for us. And what else you asked? Sorry.
नहीं, आई हैव सीन योर एक्टिविटीज। मैं आपका एक्टिविटीज बहुत कुछ देख रहा हूँ सोशल सर्विस एक्टिविटीज में भी। मैं यही कभी कभी सोचता भी, हम लोग भी साथ में भी, हम लोग 5-7 साल पहले आप हमारा प्रोजेक्ट में भी आप आया हुआ चीफ गेस्ट में, मैं भी साथ में काम किया हुआ है। मेरे को एक पर्सनल पूछने का था आपको, लाइफ ऑफ मिस अर्चना पटोडिया बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज कैसा चेंज हुआ? यस सर, मैं एक चीज जो भूल गई थी आपके पिछले वाले क्वेश्चन में सोशल सर्विस का, क्योंकि आज इतने लोग देख रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि आपके माध्यम से वो संदेश सब तक पहुंच सके। अभी लायंस क्लब में जब मैं प्रेसिडेंट बनी थी तो और तो सारे सर्विस प्रोजेक्ट अपन लोग करते ही रहते ही हैं, लेकिन मेरा बड़ा मन था कि एक विलेज अडॉप्शन का मुझे करना है, क्योंकि वो एक परमानेंट रहेगा। रोजपाड़ा का नाम आपने इसमें जैसे सभी ने सुना ही होगा। ये एक ऐसा विलेज है सर जो हाइट पे है और जहां पे लोग रहते हैं, और वहां मुझे जो लेके गए थे उन्होंने बोला था यहाँ पे हबीब भाई है अपने लायंस क्लब के, वो मुझे वहां लेके गए थे एंड उन्होंने बोला यहाँ पे लाइट की जरूरत है। लेकिन वहां जब मैं गई तो मैंने देखा कि वहां लाइट की जरूरत नहीं थी बल्कि वाटर सप्लाई की जरूरत थी। उन्होंने मुझे बोला कि मैडम आप हमें ये काम करवा के दे दीजिए, और मैंने ऐसे देखा कि वहां कुआं नीचे है और वहां से पगडंडी के थ्रू लोग एक एक मटका पानी लेकर के ऊपर आ रहे हैं। उस सीन ने मुझे एकदम, मैंने कहा अब और कुछ तो करना है, नहीं करना, ये प्रोजेक्ट सबसे पहले करना है। और वही अगेन बात कि मैंने ऐसे सोचा और उस ऊपर वाले ने करके दिखा दिया, और वो हमारा पहला प्रोजेक्ट हुआ सर। और आज कम से कम भी इस तरह के 5 से 10 विलेज हो गए होंगे जहां पे हमने ये वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट किए, सोलर लाइट के किए, सैनिटेशन के किए। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगी कि इसमें मेरा अपना अकेले का कुछ भी योगदान नहीं है, ये सब हमारे ऊपर वाले की कृपा से और सबके सहयोग से ही ये संपन्न हुआ है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बराबर बराबर। यस, आपने पूछा था बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज। यस, बिफोर मैरिज भी मैं एकदम ऐसे ही आउट स्पोकन थी, इवन टीचर्स भी थोड़ी डरती थी कि तुम बहुत ब्लंट बोल देते हो। एंड आफ्टर मैरिज भी एंड आफ्टर मैरिज भी मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज जैसा करना नहीं पड़ा बिल्कुल भी, क्योंकि टचवुड मैंने बताया हमारी जो फैमिली है, पेरेंट्स हैं, मतलब मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे सास ससुर हैं, मेरे जेठ जिठानी हैं, मैं सबके साथ जो रह रही हूँ तो मुझे एकदम बड़े मतलब छोटी हूँ तो मुझे पीयर में भी छोटे का स्नेह मिला, प्यार मिला, और सेम थिंग विल हैपन इन माय ससुराल आल्सो। सो इट्स ऑसम, मतलब मुझे कुछ चेंज करना ही नहीं पड़ा सर, मतलब अपने आप ग्रो होते गए और सब लोग का प्यार मिलता ही गया। अनिल जी इतना फ्रीडम देके रखा है आपको। बिल्कुल एकदम, अनिल जी देखिए इधर ही बैठे हुए हैं, पूरा सुन रहे हैं मेरा एकदम से। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। अब मेरे को बताइए अर्चना मैम, आयुष अभी बड़ा हो गया है, अभी आयुष को आप छोटे से आपने एक माँ बच्चे को कैसा सब कुछ में हम लोग भी सब जानते हैं। अभी आप आयुष को देखा है बचपन से, छोटा छोटा उम्र से स्कूल पढ़ के कॉलेज पढ़ के, अभी वो प्रमोटर बन गया, आपका खुद प्रॉपर्टी। हाउ गुड यू फील एज अ मदर दैट योर सन इज ग्रोइंग टू दिस लेवल वेयर ही इज गोइंग टू स्टैंड हिमसेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर, खुद संभालने वाला है। मैं अभी आपका बोरीवली का भी होटल को आपने खोला है, ये सबका कारण आयुष का भी बहुत बड़ा रोल है, ऐसा तो मैं तो सुना हूं। बट आपको कैसा फीलिंग होती है एज अ प्राउड मदर? Anything a mother only can feel how good for her it will be to see her son growing in front of her. What is your feeling on Ayush's growth? सर आपने वैसे मेरा आंसर खुद ही दे दिया, क्योंकि ऑब्वियसली एक मदर के लिए इससे, पेरेंट्स या मदर के लिए इससे बड़ी खुशी की बात हो नहीं सकती है जब उनके बच्चे उनकी आंखों के सामने ग्रो करते हैं। एंड नारायण की कृपा से, माँ भगवती के आशीर्वाद से हमारे बच्चे इतने संस्कार से हैं, जहां आज की लाइफ में हम बच्चों को देखते हैं पार्टीज करना, क्लब्स जाना, दे आर ऑल आउट, मतलब बहुत बहुत दूर है उन सब चीजों से। और वो इतना डेडिकेटेड है, उसका डेप्थ ऑफ नॉलेज इज सो मच कि मुझे उसको देख के मतलब इतना प्राउड फील होता है कि वाओ, कि ऐसे बच्चे ने, ऐसी सोल ने हमको पेरेंट्स के रूप में चुना। डेप्थ ऑफ नॉलेज इज सच ए लेवल, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। वो किसी भी चीज को मतलब ऊपर से पढ़ के नहीं करता है, ऊपर से देख के नहीं करता है, उसे ये बोल दे कि आयुष ये है और ये करना है, नहीं, ही विल नेवर डू दैट। वो पहले उसका पूरा नॉलेज लेगा, उसको समझ में आएगा तो ही वो उस चीज को करता है। तो उसका ये एटीट्यूड, उसका ये डेप्थ ऑफ नॉलेज, उसकी लर्निंग पावर, ये सब बाइक को और भी न्यू हॉरिजन्स पे डेफिनेटली लेके जाएगी। एंड जो अपना वो खुद का भी एक नया स्टार्टअप कर रहा है,
उसमें भी उसको काफी हेल्प मिलेगा। एंड ऑब्वियसली उसने जैसे ही ज्वाइन किया एक नया सॉफ्टवेयर हमको दिया है जो नॉट ओनली बाइक मतलब इन कमिंग डेज आई थिंक अपने सभी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को हेल्प करेगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वी रिक्वायर दोस काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हमारा इंडस्ट्री में जुड़े, हमारा इंडस्ट्री और आगे बढ़े, यही हमारा विचार है। ये शो उसके लिए मैंने चालू किया। इसमें बड़ा सब लोग को स्ट्रगलर सब लोग को लेके आता हूँ, उनसे कुछ से पूछता हूँ और उनका लाइफ कैसा हुआ। और आपसे एक ही लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को आपको बेटा भी लेके आने का है स्क्रीन में। आप फ्यूचर इंडस्ट्री, ये होटल इंडस्ट्री वाला हुए पैंडेमिक सिचुएशन में आपका एडवाइस क्या होएगा? एडवाइस के रूप में मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ ऐसा जो सभी के लिए वेरी इंस्पायरिंग हो सकती है। एक बैल एक बार एक कुएं में गिर जाता है। सब लोग बहुत कोशिश करते हैं उसको बाहर निकालने की, लेकिन वो बाहर निकलना उसका संभव नहीं हो पाता है। तो बाद में वो सब लोग सोचते हैं कि इसके ऊपर मिट्टी डाल दो क्योंकि अब ये निकल नहीं सकता है। तो सब लोग मिट्टी डालना शुरू कर देते हैं। मिट्टी डालते हैं तो वो बहुत बैल की रोने चीखने की आवाजें आती रहती हैं, लेकिन बाद में धीरे से वो आवाज शांत हो जाती है। वो लोग सोचते हैं कि क्या हुआ, और जब वो लोग नीचे देखते हैं तो सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि वो बैल वो सारी मिट्टी से स्टेप्स बना लेता है कुएं के अंदर और वो स्टेप्स पे चढ़ करके बाहर आ जाता है। तो द सेम थिंग आई विल सजेस्ट कि ये समय जो भी है, बाइक और अनिल जी को मैंने देखा हुआ है कि जो भी कठिनाइयां आई हैं उनको उन्होंने अपनी सीढ़ियां बनाया है ऊपर आने के लिए। तो द सेम थिंग आई विल टेल एवरीवन कि आप भी अपनी जो कठिनाइयां आ रही हैं, ये जो समय आ रहा है, कोई बात नहीं है, इससे अपने को अपनी सीढ़ियां बना करके हमको इससे ऊपर आना है, बाहर आना है और हम लोग और भी ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे। अभी आपके साथ कितना एम्प्लॉयज काम करते हैं टोटल होटल्स में पकड़ के? अर्चना जी 800 सर। 800 families are able to live their life peacefully because of bike hospitality. Indeed a proud moment, indeed a proud moment. अर्चना जी, आपको ये शो में थोड़ा सा मैं आपको रुकना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा ब्रेक अभी लेता हूँ, उसके बाद आपका सन का इंटरव्यू करना चाहता हूँ। उसके बाद लास्ट में आप हम लोग 4 लोग वापस मिलके बात करेंगे। Definitely, sir. Thank you so much for giving me this opportunity to connect so many. It's my pleasure. Thank you for the precious time. आपने हमको लिए समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. It's my great pleasure. Thank you so much. प्रदीप जी, let's go on to a commercial break. हम लोग यूं गया यूं आया।
These are which are is powering this hospitality show. My friend, Dr. Vikram Kamath, is the managing director of Wits Groups of Hotels, and it has now ventured outside India also. And we wish them all the success. Team the top class wishes them all the success. We heard our first guest, Mrs. Archana Patodia, giving us beautiful tips on how to run a hotel industry, how to retain staff, how to respect people's, what satisfaction she gets by doing uh, charity projects and whatnot. She made it very sweet and smart, short, but the message conveyed was indeed a grateful message to many of the people. For me, at least, it was an eye opener because a lady from a village has come to the city and has attributed to whatever she has done and the way she has ventured out and the family has supported. This is what is very rare to be seen in the Indian community now. But joint family always works, and that is what Mrs. Archana Patodia has told us. Now we have the second guest for the evening of today. I call it as a mother-son duo. And to do the honors, let me ask Dimple Madani to welcome Mr. Ayush Patodia to the show. Thank you, sir. It gives me an immense pleasure to invite our second guest for the evening, Mr. Ayush Patodia. Ayush Patodia is the scion of the illustrious Patodia family. As son of the first generation entrepreneur, Mr. Anil Patodia. Ayush is no stranger to the uncertainties and challenges that a business has to be navigated through. As the Bike Group of hotels have grown from a modest enterprise to a formidable force to be reckoned with the hospitality industry. Ayush has been extremely fortuitous in having front row seat to learn from the stupendous growth. Although Ayush has informally been involved in Bike since its inception, he currently serves as the youngest promoter of the company and is striving to modernize its technological backbone to bring cutting edge tools for improving guest experience and financial performance of the company. So, ladies and gentlemen, please welcome Mr. Ayush Patodia. Welcome to the young dude of the industry, Mr. Ayush Patodia. Mr. Ayush, it gives me immense pleasure to have an entrepreneur on this hospitality show, which is very well honored of being having you here. How does it feel for you, Mr. Ayush? Well, sir, the privilege is entirely mine. I feel absolutely elated to share this August platform with you. I look forward to having an engaging and a purposeful conversation. And I'm sure I'm going to, and by the end of this conversation, I'll be a lot more knowledgeable than I am right now after this conversation with you. Here I see your humbleness. This is what a person has to be when they grow together. Now, let me tell you how Bike is the fastest emerging company in the hospitality industry, as I have seen it growing leaps and bounds. What role are you playing there? So, sir, to answer your first question, I mean, before speaking about what role I'm playing in Bike, I would like to speak about Bike. I mean, Yes. and when we speak about Bike, I'll have to take you with me back to the late 19th century. So the origin of Bike actually can be traced back to late 19th century when the then collector of Thane, Mr. Hugh Mallet, built a quaint little bungalow in Mathiran. And it was the first permanent brick and mortar structure there. And through the centuries, that quaint little bungalow has evolved into a marquee resort. And over the century, the ownership did remain in flux. But we took over the property in 2007. And incidentally, the name of our company, Bike, has been derived from the horse which Mr. Mallet rode on route to Mathiran. Now, the experience from operating our maiden property in Mathiran granted us the conviction that we could become a trailblazer in the Indian hospitality industry. And we haven't looked back since then. Now, as far as my role in the organization is concerned, I was inducted in the organization informally as a prepubescent kid, equipped with nothing but just a voracious curiosity. So, being being in a Marwadi household, it's a rite of passage for young kids to start learning the ropes of a business. So, through the years, I would like to believe that my growth has been analogous to the meteoric growth of Bike. And today, my role in the organization is to lead it into a postmodern era
while staying true to the traditional values which have been ingrained into my very being throughout my upbringing. Now, if I have to get a bit more specific about what I do, well, it's twofold essentially, where we are trying to bring in technologies which allows us to provide better service to our guests, and the other part is to give us the wherewithal to find how we can work more efficiently without compromising on the quality of the product and the service which we are offering. So, where all is bike hospitality, bike hotels now in India? So, sir, bike currently we have, it's located all over India. Mathiran, we have 2 properties. Goa, we have 2 properties. Manali, 1 property. Jaipur, we have a property. Thane, we have 2 properties. Shimla, we have a property. Bangalore, Kovalam, Kochi, and Junagadh, Ooty, and Bodh Gaya. And the latest addition has been Borivali, as you explored quite well in the previous interview. So around 16 to 17 properties all around India, I can say, if I can count my count. Yeah, correct. Wonderful. Now, Mr. Ayush, how was your school days? How was your college days? Can the sweet memories can we cherish? Well, sir, my college days and school days were fairly banal, to say the least. I mean, I was an above average student. I did put a lot of focus on my studies, and being a son of an overachieving mother, it's never easy. You don't have it easy, so you're put through the same rigors. So I had to really focus, pull my socks up academically, and that was about it. And same goes for college. Although in college I did get a lot of opportunity to explore my oratory skill, public speaking skills, which did help me a lot, and I made friends in college which have stayed with me till now. So that has been one of the biggest gifts which I have received through those period, apart from obviously the knowledge and all those things. Very nice, very nice. What are your habits like, Mr. Ayush, if I can ask you? What are my habits? What are your habits and what do you like the most? Well, sir, I mean, it's a very vague question. I don't know. I like speaking a lot. That's one habit I have, and I like conversing with people who know more than me, because that allows me to get better, to learn more stuff. And another thing which I have is that I'm very argumentative, so I tend to disagree with a lot of people, but I like to believe that I'm not disagreeable. So that's about how my habits. Oh, very nice. I think there is a system, Pradeep, there is some problem in the there is some problem in the coverage or some problem in the technicality. Pradeep, are you there? Sir, I can't hear you very well, sir. Actually, just give me a minute. I think I should join back. There's some issue with my. There is some connectivity problem, if I'm right. Yeah, Mr. Ayush will join us fast, as there is some connectivity problem. That is what I can understand. So as we proceed on to the show, we have seen what Asna Madam has told us, that how she has been as a family and how she has seen his son grow. So this is what life is all about, and this is what the parents teach the kids how to go about in the life, and that is how the mechanism runs on a family, on a joint family, or whatever. If the family treats the kids well, that is how the future generation is born, and that is how we find Ayush kind of guy coming across. And proudly, the mother mentioned about her daughter also. So this is what a proud parents can feel extremely happy when the daughter and son are doing very good in their respective fields, and they want to achieve into great heights. That is how the whole system works. So this hospitality show, which is being powered by WITS Hotels and Resorts, this is the 10th episode, and we will want Ayush to join back as early as possible. In the meantime, Mr. Pradeep Jodani, is there a technical connection with our end? No. Yeah. Okay. He's back here. Well, welcome back. I'm so sorry. I just got promoted to the CMD's cabin. So fast. So you hospitality Joe, you get promoted fast. Better I call one like you. I've always had the privilege of failing upwards in life. So very nice. Now let me ask you, Mr. Ayush, how proud do you feel
of being a part of the Patodia Parivar? So, sir, see, the pride I feel in being a part of the Patodia Parivar is not something which I think I can evoke in words. It is something too ineffable. It is so ephemeral. But if I had to put it into words, I would say that, see, the Patodia Parivar, it has a legacy of magnanimity, it has a legacy of humility, and it has a legacy of perseverance. And the thing which has led this family to be where it is today, it is not just because of the efforts which have been put in by one generation or one person. This has been an effort which has been put throughout the generations, where each successive generation has has taken this legacy further through sheer perseverance, through sheer tenacity and true grit. And the only thing I hope is I can live up to the legacy which has been bestowed upon me. That's it. I am sure you will live up to more than their expectations. That much I can tell you. Because at this age, the way how you are speaking and the way you are, the deliverable of talks is concerned, because I also come from a very low background, so I also can understand how an entrepreneur has to speak. You are on the right direction. I will definitely see you somewhere in the next I should be seen. What is your biggest strength, Sahil, as per you? So, sir, the biggest strength I have is my sense of self-awareness. So, I'll just elaborate a bit more on that. So, I'm very aware of how little experience I have. So, that is why I keep trying to meet people who not only have more experience than me, but also try to meet people who have diversity in their experience as compared to mine. So, that is one thing. The other thing I'm very much aware of is my lack of knowledge. So I keep trying to read as much, and reading only allows you to know so much. So even more than that, it is important that you take cognizance of everything that is happening around you, be it current affairs, be it the business, everything. And then the other thing which I'm very aware of is that the limitation which I can achieve on my own, my limitation as a person, as an individual, how much what all I can achieve, and what I can achieve on my own is not enough for me to fulfill the dreams and aspirations that I have planned for myself. So one of the biggest things which I try to do is I try to surround myself with friends and colleagues who are a lot more capable and smarter than me. And I keep getting more and more self-aware every day. And as that sense of self-awareness increases, I get to know about my limitations a bit more, and that allows me to get better every day in every way. And that is that motto, the way of life, that you have to get better every day, every way, is something which I've inherited from my father. So I think that is my greatest strength. Wonderful, wonderful, wonderful. Can you throw some light of your latest venture in Borivali? So, sir, the property in Borivali, which we have most recently opened up, it is a 40-room property, and there are various categories of rooms in that property, and it is smack adjacent to the station. I mean, you are a resident of Borivali, you would know more about how pristine, how prestigious the location of that property is more than anyone. And so, by having a property in that location and the type of rooms we are offering with the quality of service which we are known for offering, the type of customers we are trying to cater to are not just the varied travelers who are coming in from the station, but also the local Borivali residents. So, one thing which is very peculiar about Borivali is that it has, I think, the highest population of gourmands in India. So they are food aficionados, they love food no matter what. So one of the things which we are focused on, we are focusing on in our property, although the restaurant hasn't opened yet, is the menu we are designing for that property. And I assure you that the food service in Borivali is going to be absolutely great, and it is coming from someone who knows that the guest in their property comes for the room but stays for the food. So that is going to be one of the mainstays for our property. That is what we are trying to push, and we hope that the residents of Borivali are very receptive of it. You foremost in that. It is very well honored to have you here, because there is no great such very good hospitality as I see yours as Aditi Deva Bhava. So I am sure that will be kept up to the expectations of what Aditi Deva Bhava is. Now tell me, Mr. Ayush, how often do you frequent your properties? So I, sir, frequent my properties very, very, I mean, a lot of times in a year. I mean, it's not possible for me to even say what the typical frequency is. But, the issue arises that, you being one person,
and there being 15 properties, 17 properties, even if I were to, let's say, go to each property in a month, it would take me 1 year and 5 months to get back to the property again. So I like to believe that, vicariously through the team which we have under me, I'm present at all properties at all times. And that's not to say that I'm omnipresent, it's just that the team is that much more capable than me. I loved your calculation. You calculated so fast and told me 17 properties to go. If I have to go for the second time, it will be 1 year and 5 days or 5 months. That is what your mom also told me, that you first understand things, analyze things, then only you get into it. That's what an entrepreneur you have to be doing in the process. Now, let me ask you a very tricky question. How good are you as a cook? I'm fairly decent when it comes to Maggie, sir. So Maggie is the best food you mean to say that you can cook it for yourself. Can you share one best as well as the worst experience with your guest? I hope the worst is not there. Let me share. I'll tell you. Actually, this is. You've asked a very good question, and that allows me to share an experience, and it brings together, how my life has been in bike overall. So, as a kid, so we took a bike in 2007. That time I used to be in 6th standard. A 6th standard kid is 12 years old. And one of the things which used to happen is that at that time we had only one property, and there used to be only 2 people who used to take calls, for making the reservations for that property. And I also had the opportunity to take up the calls a few times, because in Mathiran the business is extremely dependent on the weekends. So the volumes of calls pick up exponentially as the weekend approaches. So Thursday, Friday, you'll see the volume go through the roof, and you don't want to miss a single call because you want to make as many sales as possible at the best rate possible. So, I used to be given the privilege of making a few reservations. So I made one reservation, and that is the customer. I'll not take their name, but, I made the reservation. And, luckily or unluckily, the next day we went to Mathiran ourselves. So I even used to sit at the reception that time, although I didn't do anything at the reception whatsoever. I used to just sit there and mind the calls. So many a times, the guests would call, ask for basic things like water, coffee, and all those things. So I used to note those things down, and I used to forward it to the respective department. And the guest whose reservation I made ended up, approaching the reservation desk, and he was very surprised to know pleasantly that, it's a young kid who took his booking, and, it was a very genial conversation and an entire thing. And then that guest went to his room. And before going to his room, he asked me, what do you think of the room? Now, the room which we had given him was the biggest room we had in the property. It was the best room, but it was the most recently renovated room. So I said, it's the best room we have here. And he went in there, and I got a call from him right away. Now, he didn't know I was the one who was going to pick it up. But he called me, and I ended up picking the call because I was at the reception and everyone else was tied up with check-ins and all those things. So I picked up the call and I asked, hello, reception. And he said, who's this? I said, it's Ayush. I'm at the reception. Is this the same kid who took my reservation? I said, yes, it's him. Maybe, I don't know. So he said, I'm one from this room. I said, okay, yeah, it's me. So he said, this is a horrible room you have given me. It is that I can't expect anything worse. And he was extremely angry. And that is how guests typically are, because in Mathiran you're walking 4.5 kilometers to reach the property. And then the first thing you go in, if the socket is not working, it's the most minute thing which can, just blow that fuse apart. And, that was a very traumatic experience for me, because then I went to my father and I was crying. And now that was the worst experience. Now I'll get to the best experience. Now, fast forward 10 years later, I'm like 3 years back, 3 to 2 years back. I was visiting my Mathiran property, and guess who I ended up crossing paths with? So I crossed paths with the same guest who was extremely angry with me, all those years ago. And then I got to talking with him because, it was a very traumatic experience for me. So I would never forget that guest's face. So the moment I saw him, I went there, I introduced myself, he recognized me. And then the first thing I asked him is, sir, why are you here again? Because, considering the horrible experience you must have had, you've taken the most expensive room, what is ideally supposed to be the best room in the property, you would never come here again, and you would do your best to not let anyone else come here again. So what he told me was that after I went to my father crying, my father went out of his way to give him a service which he wouldn't have received even in the best of the hotels, even with the most VIP treatment given.
And Oh. that is the biggest takeaway, sir, that, for our guests, so if you want to leave a guest happy, the product can only take you so far. What matters more is that human personal touch, which has to be through service. So where you have to be, where in our which in the Indian culture, if you follow the Atiti Deva Bhava, the Bhava motto, comes very naturally. And even if you have some shortcomings in the product, you can make up for it in the service, but it can never be the other way around. If a bad service can never be fulfilled with a good product, a bad product might get fulfilled with a great service. And that is what I've learned, and that has been sort of my experience in bike in a microcosm, what I have taken away from everything. Wonderful, Mr. Ayush. This is a very, very nasty experience, but turned into a very pleasant experience for the customer. I still look at it like overall, if I think about it, it's like still the best experience I've ever had overall. Very true, very true, very true. Now, I know your mom and dad are next to you only, but you have got only one choice to choose. Who is your best, father or mother, dad or mom? Best Only what? Friend? Only one you can choose. So, best what? Friend? I mean, from what perspective best? Yeah, I believe the kids has to be as your friend. You treat your kids as your friend, then only then only we can go together. Well, see, I'll be very honest. So I'm a huge believer in the ashrama system of Hinduism. So I'm supposed to be in my brahmacharya ashrama, and under brahmacharya ashrama, you're supposed to have a guru. So I made my father my guru the moment I started my life, and so for me, my friend is always going to be my mom, and my father will always be my guru. So that is wonderfully done, both of them. You made both of them happy, isn't it? I don't know. You'll have to ask them. Very nice, very nice. Now you should have been a traveler also. Do you travel quite often? Also, I'll be very honest, sir. I don't enjoy traveling. And that is one of the only reason why I would travel more for the company than the location. So if there are good people around me, if I'm surrounded with interesting people like my friends, then I would enjoy the journey. But otherwise, I am usually a sort of like a house mouse. I stay in the house. Stay in the house. Now, you had been in the family background, you had been a joint family, everything has been very nice. I heard your sister is also an entrepreneur. What does she do? So, my sister looks after our pillow manufacturing division. So, one of the lesser known facts about my father is that prior to starting bike, he used to be a distributor in Decron. And, after we began, we started bike, and it grew leaps and bounds. What we started, thinking, we started doing the calculations and everything, we realized that our own captive consumption of pillows, linen, and all these things was so high that maybe it made more sense to start a facility which would manufacture pillows. And so that is when, anyways, he had that experience dealing in pillows, so he felt quite confident about it, and he started it as a business on the wayside. It wasn't something which he focused on too much. And my sister, she came in, and she took that bull by its horns, and she made it into something which is a lot bigger than what my father envisioned it to be. And that is what she's looking after entirely. And in fact, although she is my younger sister, I think she has inspired me more with her work ethic than anything else, honestly. So nice of you to hear about your sister. That's very nice. Now, it's going to be a very tricky question, but you have to answer this as well. Okay. I wanted to know, as Ayush chosen his future lady of his life, girl of his life, or is she going to be from the hospitality industry? Archana ji and Anil Bhaiya, please excuse me for this question, but Mr. Ayush has to answer this question. So, sir, see, I already told you I'm in my brahmacharya ashrama. So these are things which I've never even thought about. They've never crossed my periphery also. So unfortunately, I haven't given it enough thought to give you an answer. But trust me, the day I'm out of this ashrama, you will be the first one to get the card for the wedding. Okay, very nice, very nice. So where do I see Mr. Ayush Patodia down the line in 3 years? So, sir, in 3 years, for me, the measure growth is the only way, right? I mean, you have to keep growing, and
the measurement of growth, which has been passed on to me through the learnings which I've gotten from my parents and the people I live with, is that growth, it cannot be measured in terms of something which is monetary, fiscal, or something like that. Growth has to be measured by the quality of person you are. So for me, I expect that as compared to today, 3 years down the line, I would be a lot more capable and willing to help society and be a net positive on here on the face of the earth. That is what I expect to do, and that is what I endeavor to do every moment. So, what has this pandemic taught you as a person, as a hotelier, as a human being? What has this pandemic taught you? So, sir, the fact about this pandemic is that calling it a trying time for the hospitality industry would be an understatement. I mean, it overnight pitched the entire industry into an existential crisis unceremoniously. Now, coming from a background where my parents, my father specifically, has seen times which are a lot more trying than this. The first thing he told me, so I had a conversation with my father, right after the pandemic started, and my entire viewpoint was that we need to start buckling down, winding down. We need to get smaller. We have to survive. That is how what my perspective was on the matter. And then the first thing my father told me is that is not what we are going to do at all. So this entire, this huge dark cloud that you see, there is a silver lining. And and he said it at that time, and he wasn't very specific about it, and I just let it go. He's the decision maker. So I'm here to learn, not to make decisions. That is my aim here. So I just sat tight and I observed. And the moment the first lockdown started winding down, the silver lining was there, because our properties, the leisure properties which we have, Mathiran, Goa, Shimla, they were seeing numbers hitherto unseen. I mean, we hadn't seen such volume, such footfall ever in the time when we started managing these properties, especially from the Indian customers. So we have a lot of inbound foreign customers, so that we have seen numbers like this, but the Indian traveler traveling so vociferously, we hadn't seen. And that is when, I mean, what my father realized then, I realize now, is that the Indian traveler, the average Indian is chomping at the bit to travel. He has been explicitly prohibited from traveling for so long. So now is the time when he's going to travel with a vengeance. And that is what we have learned, that this is not the time to be negative and think about what's past, the demand that you have lost, the revenue you have lost. But what is more important is to look at what's going to come ahead, and what's coming ahead is going to be it's going to bring in an exuberance into this industry which has never happened before. And and that is why for us personally at Byte, the philosophy which we are following right now, although initially I was planning on just surviving, right now we are planning on thriving in this pandemic. That is what we have taken away from this entire event. Wow, wonderful, wonderful. Your long eyesight will take you wonders. That's what I can understand. Thanks for coming on the show. It's been a real honor, real privilege to have you here. And I'm sure we will call you back once again on the show 2 years later on, during which I will see Mr. Ayush Padudia and a different out of Brahmacharya, and I will have Mr. come and attend the marriage as well. So, Mr. Pradeep, can I have all the people on the stage, all the guests for today's evening, as well as Dimple on the screen, so that we can give a vote of thanks? Dimple, over to you. Yes, sir. As we draw close to the 10th episode of the Hospitality Show, I would like to thank Mr. Pradeep Jodhani, the technical head of the show, Dr. Ananth Vaidyanathan, the visionary and the creator for this wonderful event, and Mrs. Archana Patodia and Mr. Ayush Patodia, our honorable chief guests, for making this show super successful. Last but not the least, I would like to thank our online viewers who has contributed equally to make this show super successful. So, ladies and gentlemen, till our next episode, signing off from the Hospitality Show, Dimple Madhani. Good night and Shubh Ratri. Thank you so much, Archana ji, Anil Sahib, and Ayush, for coming to the show. It was wonderful having you here. I'm sure there are a lot of viewers, but so many people, they don't watch. We crossed 20,000 viewers last week, but people don't watch instantly.
but they watch in YouTube, they watch in Facebook after the later time. And I shall keep you posted. It was a pleasure having you here, and we look forward for a long time association with Bike Hospitality, as we being in the hospitality industry as well. Thank you for coming to the show. It was indeed honor having you. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you for having us. Thank you. Thank you so much. Bye. Bye. This was the 10th episode of the Hospitality Show, powered by WITS Group of Hotels and Resorts. In these episodes, we have seen so many people coming on the show. If you have missed this episode live, please you can watch it on YouTube as well as Dr. Ananth Vaidyanathan Facebook page within 1 hour from now onwards. Do post your reviews, which will enable us to improve ourselves. This pandemic time, we are not out of the pandemics. Now, I understand from the recent government orders, the kids are also getting corona. So we should be very, very careful about our kids, careful about taking care of them, not allowing them to go out. Take care of your environment. Help the poor. Feed the poor. Let not be hungry. Let us maximum try to feed at least one person a day. At least 10 people. If 10 people can do, there are 100 people who will come forward. This is my humble request towards the show. And this have so many viewers who have watched it. It is indeed having you here. And next week, we have a very great personality who is a very known Mumbaiker who is going to be present on the show, who is Mr. Rohira from Rahul Rohira, the managing director of the executive enclave, the 4-star property at Bandra. So until then, it is Ananth Vaidyanathan signing off. Love you all. Thank you so much.